So we just start with the questions. Question number 85 of your digest. Law of conservation of linear angular momentum. Fine. See, a spherical water ball is revolving at 60 rpm. So there is a water ball and it is revolving at how much frequency? 60 rotations per minute. That is 1 rotations per second if I divide by 60. Barabar? 48% in a course of time, 48.8% of the water leaks out. Leaks out मतलब उसका volume कम हो चुका है. Density of the water remains the same inside, but पानी बाहर निकल गया. इसका मतलब mass of the water balloon becomes less, volume of the water balloon becomes less. Do I know this formula? Density is mass upon volume, so mass will be density into volume. But I know density is constant, so mass is going to be proportional to the volume. So can I say M1 upon M2 will be V1 by V2? Yes or no? Hello? Are you all getting it, right? So can anyone tell me how much was the initial volume and how much is the final volume? Initial volume was 100%. 48.8% is leaking out. मतलब वॉल्यूम 2 जितना बचा है बलून के अंदर या बॉल के अंदर, it was 52.2. Yes or no? Yes, sir. 51.2. 51.2. Yes. Okay, so this is the direct thing. Acha, we also know one thing, that volume of the ball is 4 by 3 pi r cube. This is a sphere. So can I say this is also proportional to V1 upon V2 is R1 upon R2 the whole cube. Yes or no? So what will be R1 upon R2? V1 upon V2 is to 1/3. Remember this thing, it will be very important. अच्छा, we know one thing, that जब एक body घूमता है, so the main important thing is moment of inertia. Now since the mass has changed, the volume has changed, the radius has changed, the mass has changed, volume has changed, radius has also changed. So if the radius is changing, moment of inertia will also change. Can anyone tell me what is moment of inertia for a solid sphere about an axis passing through center is 2 by 5 mr square? Can I say initial moment of inertia was I1, final moment of inertia is I2? It could be written as M1 upon M2 into R1 upon R2, the whole square. Yes or no? Hello? So can I write this as I1 upon I2 in place of M1 upon M2? तो वैसे का वैसे ही रहेगा. In place of R1 upon R2, can I put this? So this will be V1 upon V2. R1 upon R2 is raised to 1/3, but यहाँ पे 2 भी है, तो this will become 2/3. Hello? Yes or no? Yes or no, beta? So can I write this as I1 upon I2 will become M1 upon M2? बट हम और पीछे जाएंगे तो हमको पता है कि M1 upon M2 is same as V1 upon V2. देखो, so V1 upon V2 की जगह M1 upon M2 लिख सकते हैं, which is raised to 2 by 3. This is the same.
So can I say I1 upon I2 will become M1 upon M2 raised to 2 by 3 plus 1 is 5 by 3. This is okay. This is the basic procedure how we go about it. Now, whenever this kind of thing happens that some of the water is leaking out, can I say the balloon is shrinking? That was the initial volume. This is the final volume. Can I say this will shrink and this will give rise to N2, which I don't know. But can I say the net external torque acting on the system is zero? That means initial angular momentum of the system is equal to final angular momentum of the system. This we had done it. So can I say I1 omega 1 will become equal to I2 omega 2? This also we have done. इसको बोलते हैं law of conservation of angular momentum. I1 omega 1 is I2 omega 2. What does I stand for? अच्छा, we know that one thing that I1 upon I2 मैंने starting में ही निकाल के रख दिया है. So I1, अच्छा, omega का formula if you remember it is 2 pi n1 and I2 this will become 2 pi n2. So we require n2. N2 will become I1 upon I2 into n1. So n2 will become I1 upon I2 की जगह लिख सकते हैं m1 upon m2 raised to 5 by 3 into n1. So n2 will become m1 upon m2. Acha, what is m1 upon m2 given in the question as this much? That is 100 upon 51.2 raised to 5 by 3 into n1 is 1. Hello, yes or no? Yes or no बेटा? करेक्ट है क्या? अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इधर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 upon 512 5 by 3 into 1. Yes or no? इसको मैं और आगे बढ़ाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं? n2 will become 1000 था तो 10 क्यूब अपॉन 512 को लिख सकते हैं 8 क्यूब रेज टू 5 by 3 into 1. चाहिए क्यूब और इसके साथ ये कैंसिल हो गया. So this will become 5 by 4 raised to 5 into 1. That is 1.25 raised to 5 into 1. And 1.25 if you do raised to 5 will become 3.052 hertz. So this is your final frequency. It is rotating in RPS. It is given in your digest, which is solved completely. You can see it. Got it now? Hello? Did you understand? Please say yes or no. Can you say fine? Yes, sir. ठीक है. So, Yes. So whenever balloon strings or earth strings or any other body strings and rotation की बात आएगी तो हमको यही procedure follow करना है. And the most important procedure over here is law of conservation of angular momentum. That is I1 omega 1 will become equal to I2 omega 2. ये ऐसे. This is the most important step. Okay. आगे बढ़ते हैं. Question number 86. I think so we had done this last time. I don't know. देखते हैं तो भी है. If I have done it, then also. हमने आपको लीनियर मोशन में दो फॉर्मूलेस पढ़ाए थे. We are going to do that in work energy power. अच्छा, वर्क का फॉर्मूला पता है किसी को? वर्क का, वर्क डन इज force into displacement in the direction of force. it's F bar dot S bar. Hello. Similarly, can anyone tell me what will be in angular motion work done? Hello. Yes or no? Yes or no?
फोर्स की जगह टॉर्क, एस की जगह डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा. गेटिंग इट? दिस इज थीटा. हेलो हेलो, यस और नो? अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस पावर? dw by dt. That could be written as, yes sir, d by dt of work done. Work done is what? F bar dot s bar. F bar I am assuming constant है. Instantaneous power will become F bar dot ds bar by dt v bar ना. हेलो हेलो, yes or no? So इधर कौन सा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर एंड रोटेशन? F की जगह कौन आएगा? टाउ बार. एंड V की जगह कौन आएगा? ओमेगा बार. हेलो, this we are talking about instantaneous power. Hello, getting enough? So this is the case of linear and angular motion. This whole concept will be done in the chapter called as work energy and power later on. ठीक है, अभी ये फिलहाल एंगुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो हमको ये फॉर्मूला मांगता है. दैट्स व्हाई वी हैव डन. यू रिमेंबर ना, एस की जगह किसने ले लिया? थीटा ने. बी की जगह ले लिया है ओमेगा ने. ए की जगह हैज टेकन अल्फा ने. फोर्स की जगह हैज टेकन टॉर्क ने. मास की जगह हैज टेकन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने. डू यू रिमेंबर दिस थिंग? हेलो, yes or no? This is, yeah, so this is the whole thing. Now they are telling you a ceiling fan is there, moment of inertia is given as 2 kg meter square, maximum frequency is given as 60 rpm divided by 60 करेंगे तो 1 rps आ जाएगा in 2 pi seconds. मतलब time is 2 pi seconds. Calculate the power rating, मतलब instantaneous power. Formula is tau omega in the direction we are considering. Okay, yes or no? Hello hello, yes. Yes. So what is the formula for torque? Force. What is the formula for torque? Torque Force is into display. force into perpendicular distance है, जो पहला वाला formula. And second formula is equal to I alpha, if you remember. Hello, याद आ रहा है क्या? है. Yes, sir. तो यहाँ पर I'll use I alpha into omega, which could also be written as I alpha. Alpha को लिख सकते हैं omega 2 minus omega 1 by t into this omega. This omega is final omega. Omega 1 is 0 because it is starting from rest. So ये तो omega 1 तो चला गया. So instantaneous power will become I omega into this omega. So it will become omega square by t. I कितना है? 2 है. ओमेगा को लिख सकते हैं बेटा 2 pi n the whole square to t. It become 2 into 4 pi square n square into t. That is 2 into 4 pi square. N कितना है? 1 है. 1 square is 1 only. And t is what? 2 pi. 2 2 pi 1 pi. तो आंसर कितना बचा पावर रेटिंग का? 4 pi. क्या भाई? So this is the instantaneous power which is supplied at this moment. Getting it? Hello? Yes, sir. पावर का फॉर्मूला अभी फिलहाल हमको याद रखना है, इट इज टाउ ओमेगा. एंड टाउ का फॉर्मूला वी नो इट इज F dot R or I alpha, but यहाँ पर according to the condition I'll select I alpha and you will get the resultant answer. This is the power rating, that is the instantaneous power, 4 pi watt. बाबा बोलो, क्लियर है? Yes. ठीक है. Now we come to a very important question, 91 and 92, which are very very important. सुनो मेरी बात. This maximum questions which come, they come on the basis of law of conservation of angular momentum only. जैसे हम लोगों ने लीनियर मोशन में कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा है,
वैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है. द फ्लाई व्हील इज यूज टू प्रिपेयर earthen pots is set into rotation at 100 rpm. There's a flywheel. It is set into rotation. How much is the initial frequency? 100 rpm. It is form of a disc. Disc का mass कितना है? 10 kg and radius is 0.4 meter. ये इनिशियल की बात है. दिस इज इनिशियल केस. हम लोग इसकी बात कर लेते हैं पहले. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हाफ एम आर स्क्वायर. हाफ एम 0.4 का स्क्वायर. 5 into 0.16. हेलो. Yes. 0.8 kg meter square is the initial moment of inertia. And can I say how much is initial omega? 2 pi n1. बराबर है क्या? That will be 2 pi into 100 radian per second. ये सब किसकी कंडीशंस हमने कर लिया? इनिशियल कंडीशन. डू यू अग्री विथ मी? हेलो. अब फाइनली क्या हो रहा है? A lump of clay of mass 1.6 kg falls on it and adheres to it. So जब ये घूम रहा था ऐसे, वैक्स का टुकड़ा इधर आके स्टिक हो गया. मास m एंड डिस्टेंस x. और इसका घूमने का जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगा. फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वाज n1, अभी कितना हो जाएगा? n2, व्हिच आई डोंट नो. और n2 पता है हमको, इसका मास चाहिए. n2 यू नो हाउ मच इज n2 गिवन? 80 rpm. देखो दिया है लास्ट लाइन. दिस वाज 100 rpm. तो दिया हुआ. So we know that moment of inertia will change. Moment of inertia will be moment of inertia of the disk plus moment of inertia of the particle system, that is wax. Moment of inertia of the disk तो वैसे का वैसे ही रहेगा जो स्टार्टिंग में था. Answer will be 0.8. And can anyone tell me what is moment of inertia of the particle clay system? Particle का moment of inertia होता है mass into distance square. So it will become mx square. Is the resultant moment of inertia. अच्छा, is m given of the clay? Yes, 1.6 kg दिया हुआ है. देखो wax का टुकड़ा का मास दिया हुआ है कितना? 1.6 kg. And at a distance x, I don't know this x. ये x का वैल्यू हमको निकालना है. और ओमेगा 2 कितना हो जाएगा? 2 pi n2. That is 2 pi into 80. क्लियर है? ये भी मिल गया. अच्छा, I know which formula will I use. Net external torque acting on the system is 0 because they both are part of the system. I1 omega 1 is equal to I omega 2. Hello? Yes or no? बाबा yes or no? I1 कितना है? 0.8. Omega 1 is 2 pi into 100. I2 is 0.8 plus 1.6 x square into 80. So, oh, sorry, 2 pi into 80. This 2 pi and this 2 pi will cancel. Getting it? ये कितना हो गया? 0.8 into 100. 80 होता है क्या? हेलो? कितना होगा? 8 हो जाएगा ना. 80 हो जाएगा. ये भी कितना हो जाएगा? 80 into भाई क्लियर है? हेलो? Yes, sir. ये
1 बन गया, 0.8, 1.6 x square. So this will become 0.2 x square will be 1 by 8. So x will be 1 upon 2 root 2. Did you get it? Hello? Yes or no? Hello? Yes, sir. Fine. Now, a very important question is 92 question. And after that, we'll do 2-3 sums based on rolling motion. ठीक है? देखो हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, सब लोग इधर मेरी बात सुनो, ध्यान दो. A homogeneous rod XY of length L. There's a rod XY of length L. And mass M, mass is M. Length is L. Is pivoted about the center. So this is the center, it is pivoted about the center. यहाँ पर pivot कर दिया ऐसे. Such that it can rotate freely in the vertical plane. ये ऐसे घूम सकता है. ऐसे घूम सकता है. Initially, the rod is in the horizontal position. Initially, the rod is there in the which position, beta? Hello? कौन से position पे है? Horizontal. A blob of wax of the same mass M and that of the rod falls vertically with a speed V and stick to the rod midway between points C and Y. So there is a wax का टुकड़ा एक था इधर, वो यहाँ से मास M का था, वेलोसिटी V का था, वो आया और इसके बीचों बीच आके चिपक गया. बीचों बीच मतलब डिस्टेंस कितना रहेगा ये? L/4 रहेगा ना बेटा. हेलो? Midway between C and Y. और फिर क्या हुआ? इस पॉइंट को चिपकने के बाद, इस वैक्स को चिपकने के बाद द rod rotates with angular speed omega. Initially, who is moving only? Initially, this is the rod. This is point C. Only the wax of mass M is moving with velocity V. Bus. At a distance of L/4. Finally, what happens? Point C. ये ऐसे घूम रहा है with an angular speed omega. And ये इधर चिपक चुका है with mass M. Hello, do you agree? Do you agree with me? Yes or no? ये stick हो गया. Getting it? Okay. Can anyone tell me how much is the initial angular speed of the rod? 0. Final angular speed of the rod हमको मांगता है. Rod start में थोड़ी घूम रहा है. Can I say only the particle is moving with respect to the axis of rotation? This is my axis of rotation. Axis of rotation. Hello? Getting it? Now look over here carefully. Initially, can anyone tell me? अच्छा, angular momentum के दो formulas पता है. पहला formula क्या है?
क्या फॉर्मूला है? Does anyone know angular momentum का फॉर्मूला अभी हमने इस्तेमाल किया? Come on, please tell me fast. I alpha. Angular momentum is I alpha. I omega, sorry. I omega. This is for a rotating body. Acha, does anyone know for a particle moving what is angular momentum? I to pi n. What? अरे भाई, if a particle is moving, you have not seen the video man. L का फॉर्मूला क्या था? R bar cross P bar. इसको लिख सकते हैं mv into r perpendicular for a particle moving. जैसे टॉर्क को भी दो फॉर्मूलाज है ना, वन इज आर बार क्रॉस पी बार एंड सेकंड इज आई अल्फा. वैसे ही एल के भी दो फॉर्मूलाज है, एल इज आई ओमेगा and second one for a particle moving. If you see the derivations of rotational motion, I had told you I have derived angular momentum as r bar cross p bar, then usi se I have derived I omega also. Please watch the videos properly. तो यहाँ पर कौन चल रहा है? Initially who is moving? Particle is moving at a distance of L by 4 from the axis of rotation. So angular momentum of a rotating body नहीं आएगा यहाँ पर, angular momentum of particle आएगा, which will be mv into r perpendicular from the axis of rotation. Because the body is not rotating, the particle is moving over here with respect to axis of rotation. So what is the angular momentum of the particle initially? बोलो भाई. mv into L by 4. Got it? Because body घूम रहा थोड़ी है, तो I omega तो आएगा ही नहीं. Hello, please see the videos properly, otherwise you will not get it. अच्छा, फाइनली क्या हो रहा है? फाइनली बॉडी घूम रही है. फाइनली बॉडी घूम रही है मतलब एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? रोटेटिंग बॉडी का हो जाएगा. दैट विल बिकम फाइनली, कैन आई से बॉडी इज रोटेटिंग. तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आई ओमेगा. बिकॉज एमवीआर नहीं है, एमवीआर खत्म हो चुका है बिकॉज ये चिपक गया है. यस और नो? अच्छा, व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओवर हियर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीज का है यहाँ पर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड है एंड दूसरा वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द वैक्स पार्टिकल है जो चिपक गया है, इनटू ओमेगा. Can anyone tell me what is moment of inertia of the rod about an axis passing through center? हाँ भाई, ml square by 12. this will be, this L is going to become ml square by 12 and wax, that is a particle. Particle का moment of inertia क्या होता है? mass into distance square. और distance कहाँ पर चिपका है? वो L by 4 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा L square by 16 into omega final. बोलो भैया, yes or no? हेलो हेलो, yes or no? So L final, ml square by 12 plus ml square by 16 is 7 ml square by 48. This is very famous sum only, so I know the answer. इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 7 ml square by 48 आएगा into omega final. This is L final and this was L initial. Can I say that if the net external torque acting on the body is 0, that means L initial will become equal to L final? Can I say mv into L by 4 initially of the particle is 7 ml square by 48 into omega final? तो ये m l, m एक l कैंसिल हो गया, 4 12 तो ये हो जाएगा 12v by 7. Getting it? L will become omega final. So this is the answer by which the final omega it is going to revolve when the wax particle sticks to it. Did you understand? Hello?
बाबा बोलो। पहले देखो कौन घूम रहा है, पहले पार्टिकल चल रहा है, यू हैव टू टेक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेकेंडली क्या हो रहा है, ये पूरी बॉडी घूम रही है वैक्स के साथ, वैक्स चिपक गया है, तो सेकंड में ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। दिस इज द सेकंड केस एंड दिस विल बी व्हिच केस, फर्स्ट केस। रिमेंबर प्लीज, अगर पार्टिकल चलता रहेगा घूमता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, पार्टिकल है तो वी हैव टू टेक एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल rather देन अ बॉडी। बॉडी घूम रहा नहीं है स्टार्ट में, सेकंड में बॉडी घूम रहा है, सो आई ओमेगा आएगा। हेलो। so this is how we do the sums based on law of conservation of angular momentum. Now 2-3 sums based on rolling motion are there. Rolling motion, रोलिंग मोशन का फॉर्मूलाज हम लोग डिस्कस करते थे। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, that is half mvcm the whole square, and this is half I omega square. This could also be written as half mvcm the whole square. I को लिख सकते हैं mk square, where k is radius of gyration and omega will become vcm by r, because for rolling motion vcm should become equal to r omega. So if I take common, it will become half mvcm the whole square, 1 plus k square by r square. Secondly, whenever there is an inclined plane and angle theta is there and a body is rolling down, so the velocity when it reaches the ground, center of mass will become under root 2 gh, 1 plus k square by r square. And the acceleration of center of mass when it is coming down is g sine theta upon 1 plus k square by r square. This is all for rolling motion. Linear motion में रहेगा तो नीचे वाला term नहीं आएगा, it will be only 2gh under root and acceleration will become g sine theta. Rolling motion में ये वाला term नीचे वाला term आ जाता है. We'll do some couple of questions based on rolling motion so that you all can understand 103. Starting from rest, an object rolls down on an inclined plane that rises by 3 in every 5. Okay. Yeah, that is 3 in every 5. Whenever they tell you 3 in 5, that is always remember ऐसे कोई भी language दिया है तो it is sin theta given. 3 in 5. Along it ना, along it कह रहे हैं. So 3 in every 5 along it. So sin theta यहाँ पे हो जाएगा क्या? 3/5. ये तो 4 ही रहेगा ना, ये भी पता है. And the object gains a velocity of root 10 meter per second as it travels a distance of 5/3 along the incline. कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया भाई बोलो? डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया along the inclined plane? 5/3 meters. And the speed of the center of mass achieved is root 10 meter per second. What can be the shape of the body? अच्छा, shape can be determined by k square by r square. Whenever they tell you shape, always find k square by r square, ये याद रखना. Okay. Look carefully. अच्छा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 1 2 3. Come on, tell me which formula will I use? 1 2 3. यार बोलो. Hello. Please tell me which formula I am going to use. Third one, ACM. Second one, third one. Third, Third one. Do you know acceleration of center of mass? Second. You're using the third or the second? Second formula, क्योंकि आपको VCM पता है. They've given you. ACM किधर पता है?
VCM का formula is what? Under root 2gh 1 plus k square by r square. अच्छा यहां पर ध्यान दीजिए प्लीज. They are telling you this is theta. अच्छा, how much is the displacement along the inclined plane in the question they have given you? It is pi by 3. ये दिया हुआ है. He is traveling a distance of 5 by 3. Hello. अच्छा, we also know one thing that अगर ये 3 4 5 triangle है तो this has to be 37 ना? Yes or no? So if this is 37, can anyone tell me how much will be the height displaced down? यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ? Sin 37 will become h by 5 by 3. Sin 37 is 3 by 5. Is 3 by 5 into h. So you cancel, okay, h will become 1 meter. That means the height going down is 1 meter. When the displacement is 5 by 3, the height is 1 meter. So what is the velocity of the center of mass? Under root 2gh 1 plus k square by r square. Velocity of center of mass is given as root 10. Under root 2gh. h का value हमने 1 find किया. 1 plus k square by r square. Can I square both sides? ये हो जाएगा 10. ये हो जाएगा 2g. 1 plus k square by r square. Yes or no? Hello. So k square by r square plus 1 is 2. K square by r square is what बच्चा? 1. Hello. अच्छा, कोई बता सकता है कि ये कौन सा बॉडी है? k square by r square is 1 मतलब कौन सा बॉडी है ये? Ring. रिंग है. कैसे पता चला आपको? The radius of gyration of the ring is the same as its radius. Yes. Or we can say what is the moment of inertia of the ring? कितना है? Moment of inertia of the ring कितना होता है? MR. Can I write this as 1 mr square? K square by r square is always the coefficient. ये शायद मैंने बताया था. अच्छा, अगर ये डिस्क होता तो k square by r square कितना आता? Half. हाफ आता. अगर ये सॉलिड स्फीयर होता तो k square by r square कितना आता? Getting it or not? अच्छा, अगर ये हॉलो स्फीयर होता तो k square by r square कितना आता? 2 by 3. Always remember what is k square by r square stand for? The coefficient of moment of inertia. Hello. So this body is what? Nothing but what? What, sir? It is what? क्या भैया? Yes or no? It is a ring. It is a ring. अच्छा, ring की जगह पर और क्या हो सकता है? It could be a hollow. A what, man? It could be a hollow. Cylinder. Cylinder also, because moment of inertia दोनों का same है ना? Yes or no? Yes, sir. ये चीज का ध्यान रखना. This has come many times in the JE also. Please remember this thing. And और कोई दिक्कत नहीं है. I think so. Sums are done only completely. So this Friday you all will have test on. Hello. What? What? Full rotational dynamics. Now rotational dynamics जो हमने किया that based on circular motion. Second thing is rotational motion. इसके sums and इसके sums plus numericals. And don't worry कि थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नहीं समझ में आया. I'll be doing the whole revision of theory again.
when we resume back, the whole revision of theory will be done again. Okay, if you want to, that will be optional lectures. अगर आपको बैठना है तो आप बैठ सकते हो, नहीं बैठना है तो आप नहीं बैठेंगे अगर आपको आता है तो. But the whole revision will be done offline again. Hello, getting it now? So, Yes. so you told you will discuss one derivation of conservation of angular moment. Yes. I forgot. See, conservation of angular momentum. I have discussed one derivation in the video, Yes. and there is another derivation which is given in. Let me see. Page 18. Page 80. Which page? 18. 18. Okay, page 18. Yeah, just 2 minutes it will take. Just listen to me, please. Page 18 पे कहाँ है यार? 18 पे नहीं है. It's not on page number 18. Of textbook. No. I'm talking about the digest. One second. Okay, fine. See, it is page number 38 of your digest. ध्यान दो, 2 मिनट लगेगा. Page 38, digest. It is question number 83. Proof conservation of angular momentum. Question क्या है? Proof conservation of which momentum? Baba, tell me. Angular momentum. मतलब हमको proof करना है I omega is a constant या L is a constant. सब लोग इधर मेरी बात सुनो बेटा. ये फॉर्मूला आपको मालूम है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला इज फॉर अ पार्टिकल इज r बार क्रॉस p बार. हेलो. Yes. जैसे लीनियर मोमेंटम वाज व्हाट? mv ना. हेलो. Yes. दिस वाज लीनियर. दिस इज एंगुलर. हम यहाँ पर एंगुलर की बात कर रहे हैं. अच्छा, इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम लोग. सो दिस विल बी dl बार बाय dt. यू नो इट इज uv रूल. विल बी u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u. मतलब ये हो जाएगा r बार क्रॉस dp बार बाय dt प्लस dr बार बाय dt क्रॉस p बार. यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर. आगे पीछे नहीं कर सकते बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट है. तो ये हो जाएगा dl बार बाय dt r बार क्रॉस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. क्या होता है? अरे भाई, ये क्या होता है? फोर्स होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. हेलो. यस और नो? Yes, sir. dr बार बाय dt इज वेलोसिटी वेक्टर. दिस इज डिस्प्लेसमेंट इनटू वेलोसिटी वेक्टर. ये हो गया. तो यहाँ पर दो टर्म्स मिले हमको, ये और ये. करेंगे. अच्छा, इसको लिख सकते हैं dl बार बाय dt r बार क्रॉस f बार प्लस v बार क्रॉस p बार को लिख सकते हैं mv बार. देखो यहां से. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dl बार बाय dt r बार क्रॉस f बार इनटू v बार क्रॉस v बार m बार. अरे दोनों सेम ही तो है. एंड यू नो I बार क्रॉस I कैप इज 0 बार. याद है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम टाइप 0 होता है. तो मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. हेलो. Yes, sir. अच्छा, dl बार बाय dt is r बार क्रॉस f बार. व्हाट डज dl बार बाय dt स्टैंड फॉर? इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी? हेलो. अरे भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं ना. हेलो. हेलो. यस और नो?
Yes, sir. Acha, if I tell you if momentum is constant, then what is the value of force? 0. Hello. Yes, sir. अच्छा, वैसे ही what is rate of change of angular momentum? Force की जगह कौन ले लेता है? Force की जगह कौन ले लेता है angular motion में? Of Torque. Can I say it is r bar cross f bar? ये हमने प्रूव कर लिया, ये हमको आता ही है पहले से. अच्छा, एक और एक चीज, तो हमने क्या प्रूव कर लिया कि टॉर्क इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. हम क्या बोल सकते हैं, इफ एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, दैट मीन नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम कितना होना मांगता है? 0. हेलो. दिस इज ओनली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. Did you get it? हेलो. Yes, sir. एक बार फिर से देखते हैं, रिवाइज करके देखो फिर से. पे अटेंशन. सबसे पहला टर्म हमने जो शुरू किया, दैट वाज एल बार वाज आर बार क्रॉस पी बार. इसका डेरिवेटिव लो, डी एल बार बाई डी टी विल बिकम यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, बट यू कैनॉट चेंज द ऑर्डर, तो ये हो जाएगा डी आर बार बाई डी टी इंटू पी बार. आई एम डूइंग इट अगेन. डी एल बार बाई डी टी आर बार क्रॉस डी पी बार बाई डी टी इज एफ बार प्लस डी आर बार बाई डी टी वी बार क्रॉस पी बार. So dl bar by dt is r bar cross f bar plus v bar cross mv bar. But I know v bar cross v bar 0 होता है because same type and scalar product dot cross product 0 होता है. ये term 0 हो गया. अच्छा, dl bar by dt is tau bar is r bar cross f bar. तो हमको क्या पता चल गया? हमको पता चल गया कि tau bar is dl bar by dt. Rate of change of angular momentum is torque. And we know by law of conservation of angular momentum, if angular momentum is constant, the net external torque acting on the system is what, sir? 0. तो हम लोग यहाँ पर लॉ बना सकते हैं कि if the net external torque acting on the system is 0, angular momentum is constant, and angular momentum का फॉर्मूला हमको पता है दूसरे डेरिवेशन से I omega. That means I omega is nothing but what? A constant. That means I can say I1 or I initial omega initial is equal to I final omega final. हेलो. yes or no? इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ conservation of which momentum? Baba, tell me. Thank you. ठीक है, चलो. Any other doubts you all have in this chapter? Yes or no? Hello. If not there, then we can meet on Wednesday and Friday. I'll be doing what is going on. क्या चल रहा है आपका? LOM चल रहा है, बराबर है ना? Getting enough? Hello. Okay. One more announcement is there that 21st, 23rd, and 25th, Viraf sir will be taking, because we need to complete 11th standard का what? क्या भाई? Semiconductor. Semiconductors. So morning lectures will be taken by Viraf sir. Sunday को तो lectures होंगे ही sir के, but उसी के साथ में we need to complete semiconductors of 11th standard before Christmas vacations, so that after vacations we can start with unit dimensions and other chapters also. Okay. So this 3 days will be taken by Viraf sir, and my recordings will be sent of wave motion chapter. ठीक है ना? So that will be done next week. चलो, thank you very much. Bye. Yes.
Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Hi, sir.